गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसपी क्लासेस रे आपन स्वागत। आज आम स्टार्ट करवा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्वेश्चन एग्जाम रे आसे। ओके, चलंतु आज हम से टॉपिक विषय जानिबा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिया केते केते मार्क आसु जो माने एटू अपेयर करछन बा एटू एग्जाम देबे तांको पय मो ऑब्जेक्टिव सीरीज लॉन्च करोछि। सो काइंडली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां भी डिस्कशन करबे अटेंड करंतु और एग्जाम रो 100% एथरी क्वेश्चन आसे, बाहर गोटेले क्वेश्चन आसीबो नाही। तो चलो स्टार्ट करबा। आज हम फर्स्ट हमर मेजरमेंट कहला हम कोन बुझछो। मेजरमेंट माने हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को जो नंबर रे हमें कन्वर्ट करेगा सेटा को हम मेजरमेंट बोली कहबा। व्हाट इज मेजरमेंट? मन रखथबो कौन छोटा जिनस बा एक्सप्रेसिंग ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रो जो मैग्नीट्यूड टाको हम गोटे नंबर को कन्वर्टेड करेबा बा नंबर को रिप्रेजेंटेड करेबा क्वांटिटी इन नंबर रे करेबा तो हमें कोन कहबा? मेजरमेंट बोली कहबा। देन इंस्ट्रूमेंट कोन? Instruments है the device which transfer the original subject is called as of instrument। माने जो मेजरमेंट जो हमें मेजरमेंट करेबा जो मेजरमेंट बोले हमें जानिले जहा माध्यम रे होउची दैट इज कॉल्ड एज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बा अदरवाइज हमें कोन कहउचे द डिवाइस व्हिच ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो इंस्ट्रूमेंट्स विषय जानिले। सो नेक्स्ट देखिबा हम पॉइंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड देयर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखो एक मार्क क्वेश्चन आसीबो, एक मार्क क्वेश्चन 100% कोन जे कोन से हमें क्वांटिटीज पढुचे बा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हम जानुचे तर स्पेसिफिक ऑफ यूनिट विषय जानिबा हमें को इंस्ट्रूमेंट रे व्यवहार कराउची से विषय हमें जानिबा। जेमिति कि वोल्टेज क्वांटिटीज को हमें मेजरमेंट करूचे कोथरे ना वोल्ट रो तार यूनिट हैला वोल्ट रो जोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोथरे यूज करा जाउचे ना वोल्ट मीटर आउ मल्टीमीटर रे हमें कोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज ऑफ वोल्टेज को जानि परबा। सेही भली भाबे करंट मध्य गोटे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जोटे कि हमें यूनिट कोन कहउचे ना एम्पियर कहउचे। एगो को इंस्ट्रूमेंट रे मेजर करना एमीटर आउ अदर रे मल्टीमीटर हमें मेजरमेंट करूचे। सेही भली हमें रेजिस्टेंस को गोटे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज ताको हमें कोउथरे यूनिट कोन तार यूनिट हैला ओम। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोन ना ओम मीटर यूज करबा आउ मल्टीमीटर यूज कर परबा। सेंते पावर फैक्टर आल्सो गोटे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज तार यूनिट कोन ना यूनिट लेस। इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ई पॉइंट ता वेरी इंपोर्टेंट। बेले बेले तमरो जो माने पावर फैक्टर रा यूनिट पचे देथियो सदा मन रखतो पावर फैक्टर रा यूनिट हैला कोन यूनिट लेस। कोन एटा यूनिट लेस मन रखथिबो एटा यूनिट लेस। एंड पावर फैक्टर मीटर रे हमें मेजरमेंट करछे कोथर मेजरमेंट करछे ना पावर फैक्टर मीटर रे मेजरमेंट करछे। सो पावर डामर को कोन ना पावर रा यूनिट हैला हमर वाट जोटे कि कोथर मेजरमेंट करा जाउची ना वाट मीटर रे मेजरमेंट करा जाउची। ये भी मते वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो बेले बेले पिला माने हमर पावर फैक्टर और पावर मते डिफरेंट जानि परंते हेति पे हमें पावर फैक्टर डामे रो यूनिट लेस सदा रहबो और पावर रो हमर मते यूनिट अछि कोन यूनिट अछि ना वाट अछि। कोथरे मेजरमेंट कराउची ना वाट मीटर रे मेजरमेंट कराउची। से बारे एनर्जी कोन ना तार यूनिट हैला केडब्ल्यूएच। यूनिट कोन ना केडब्ल्यूएच। कोथरे मेजरमेंट करा जाउची ना एनर्जी मीटर रे हम मेजरमेंट करछु जोटा कि समस्त घरे लागि अछि एनर्जी मीटर। ये बारे फ्रीक्वेंसी ये मतलब वेरी इंपोर्टेंट। एथर मतलब बेले बेले एग्जाम एथर गोटे क्वेश्चन देखिया मिले। फ्रीक्वेंसी रो यूनिट कोन ना फ्रीक्वेंसी रो यूनिट हैला हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी रे मेजरिंग को इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करबा ना फ्रीक्वेंसी मीटर रे मेजरमेंट करबा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स देखिबा। मैग्नेटिक फ्लक्स रे यूनिट कोन ना ओवर। कोथरे हम मेजरमेंट करबा मैग्नेटिक फ्लक्स मीटर रे हम मेजरमेंट करबा। सो नेक्स्ट देखिबा इंडक्टेंस। ये मतलब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मु जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दउचे एटा भला मन रखतो ये भी आल्सो। सो मैग्नेटिक फ्लक्स टा कोन यूनिट ना ओवर तार कोथरे मेजरमेंट करबा मैग्नेटिक फ्लक्स मीटर बोली हमें अछि इंस्ट्रूमेंट सेतरे मेजरमेंट करबा। इंडक्टेंस कोन ना हेनरी जोटा कि कोथरे मेजरमेंट करबा ना मैक्सवेल ब्रिज मेथड रे मेजरमेंट करि परिबा। कैपेसिटेंस कोन ना फैराडेस कोथरे कर परिबा स्केरिंग ब्रिज मन रखथबो। सो मैक्सिमम मैक्सवेल ब्रिज मेथड रे इंडक्टेंस काढिबा
स्केलिंग बेस रे आमे कैपेसिटेंस काट परिबा। सो फेज डिफरेंस कोन ना फेज डिफरेंस हला डिग्री ये भी गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट। फेज डिफरेंस ता आमे केन मेजरमेंट करताओ ना डिग्री जोटा कि हमरो को इंस्ट्रूमेंट रे ना फेज मीटर इंस्ट्रूमेंट। So amount of electricity कौन ना amount of electricity ला ampere hour and amount of electricity कोथरे मेजरमेंट करा जाता है ना ampere hour रे मेजरमेंट करा जाता है को मीटर रे ना ampere hour मीटर। सो पिले माने जति कि मु कहली वर्तमान सो ये मतलब ampere hour मीटर ये मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो जति कि क्वांटिटी जो ऊपर हम पढेइली से क्वांटिटी जो एक मार्क आसीबार चांस है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिबा एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस कहला में कोन बुझिसु जदि हमें गोटे इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करूचे सो इंस्ट्रूमेंट रे हम किछ ना किछ गोटे एरर रहउथबो। सो कोन कोन एरर रहउची सो केमिति हमें जानिबा फास्ट जानिबा गोटे इंस्ट्रूमेंट्स रो जोटे कि हमें केतोटा टर्म मन रखिबा जरूरी से इंस्ट्रूमेंट रे को टर्म। फर्स्ट थिंग्स इज स्केल। स्केल कहले कोन बुझे गोटे इंडिकेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट that mark the device on which the indicator and indicate the quantities of the measuring quantity is called as of a scale. That means गोटे मो इंडिकेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट नेली ओके जो इंस्ट्रूमेंट रे मोर कोन हेतबो एडा मो एमीटर रो गोटे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट देली जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट रे हम रेंज दे देथिबो दैट मींस को मार्किंग करा देथिबो एडा को हम कोन कहजो एडा को हम स्केल बोली कहबा। Okay an indicating instrument the mark like on indicating instrument the mark device on which indicator and indicate the quantities of a measurement so quantities of a measurement को जे indicate करे सेटा हमें कौन कहबा स्केल कहबा मन रखथिबो कोन थिबो ना quantity of a measuring quantity so indicate the quantity of a measured जो हम क्वांटिटी हम जति मेजरमेंट करबा जे कि इंडिकेटेड जोथरे करै परिबो सेटा हम कोन कहबा स्केल बोली कहबा। सो ये मध्य बेले बेले क्वेश्चन कैरेक्टर बेस क्वेश्चन मते हे पारे सो क्वेश्चन ऑप्शन दे देथिबो स्केल बोली दे देथिबो ओके देन तळ चारटा ऑप्शन दे देथिबो कोन हम स्केल रो काम कोन स्केल रो काम हैला सदा बेले इंडिकेटर बाय indicate the quantities of a measurement so हमें indicate the quantity of a measurement सेटा हमें मेजर करि परिबा ओके। नेक्स्ट देखिबा कोन ना स्केल रो रेंज देखिबा स्केल रो रेंज कहले कोन होस्तो ना द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट जोडे मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर हमें मैक्सिमम वैल्यू को मेजरमेंट करि परिबा कोथरे बाय एनी इंस्ट्रूमेंट गोटे इंस्ट्रूमेंट रे ता कोन कहै जिवो ना ताको हमें कॉल रेंज बोली कहउछे ता कोन कहउछे ना स्कॉल एज अ रेंज बोली हमें कहउछे कहार रेंज जेतु स्केल ऊपर रही हम स्केल रेंज बोली कहूचे सपोज देख ये गोटे इंस्ट्रूमेंट नहीं मु ओके आम इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट इथरे मते मु कोन कली मार्किंग कली दिस वन इज स्केल ओके सेंड रेंज कोन मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर इन ए इंस्ट्रूमेंट सो मैक्सिमम वैल्यू माने कोन सो 0 रू मोर वैल्यू टा स्टार्ट होची 0 रू स्टार्ट हुए देन कोन आसे 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 सो एथर मोर मैक्सिमम वैल्यू कोन एटा को कहा होची मोर मैक्सिमम वैल्यू सो आमे एको रेंज कहले कोन बुझुचे ना स्केल रेंज इक्वल टू मैक्सिमम रीडिंग ऑफ द स्केल जेति का हमें रीडिंग नहीं परिबा मैक्सिमम रीडिंग ताठरो अधिक रीडिंग नहीं हेबोनी केते ना 5 सेडा को हमें स्केल रे रेंज कहबा रेंज मींस हमें 0 रू 5 जोची हमर रेंज स्केल रेंज हला केते स्टार्ट होची ना 0 रू मैक्सिमम रीडिंग ऑन द स्केल जो स्केल रो स्पान कोन कहबो the difference of a span between maximum and minimum value of measure so हमें गोटे इंस्ट्रूमेंट रे गोटे स्केल पाइले कोन पाइले ना गोटे हमें स्केल पाइले स्केल रा कोन पाइले ना हमें गोटे रेंज मिलिला रेंज रे जोटे कि हमें 5 मैक्सिमम रहला 0 रहला हमर कोन मिनिमम सो हमें स्पान वाली कहले कोन बुझिबा ना the difference of a span between maximum and minimum value measured by an instrument is called as a span so maximum value to measure in value जति कि हम मेजरमेंट करिवो वैल्यू सेडा को हम कोन करबा ना स्पान बोली हम कहबा the difference of a span between maximum of and minimum of value so maximum value केते है ना 5 है minimum value केते है ना 0 जोडे कि हमें 1 रू स्टार्ट हे पारे 2 रू स्टार्ट हे पारे 3 रू स्टार्ट हे पारे 0 minimum value सेडा को हम कोन कहबा स्पान बोली हम कहबा always remember that maximum reading minus minimum reading मैक्सिमम रीडिंग रो मिनिमम रीडिंग को माइनस कर देले सेटा को हम कोन कहजो स्केल रो स्पान बोले हम कहबे। सो नेक्स्ट देखिबा कोन ना स्केल रो रेंज देखिबा स्केल रो रेंज कहले कोन बुझिसु ना द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट जोटा कि हमें एक रू स्टार्ट हे पारे 2 रू स्टार्ट हे पारे 3 रू स्टार्ट हे पारे 0 minimum value सेटा को हम कोन कहबा स्पान बोली हम कहबे always remember that maximum reading minus minimum reading को minus कर देले सेटा को हम कोन कहजो स्केल रो स्पान बोले हम कहबे।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एंड एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कौन नेक्स्ट पढ़िबा हमें देखो ए जो क्वेश्चन हो एथरो कैरेक्टर बेस्ड यदि क्वेश्चन आसे मे बी एक मार्क आसे बट फंडामेंटल हिसाब रे हमें जानिया जरूरी कोडा को स्केल कोसे कोडा को रेंज कोटे कोडा को स्केल रो स्पान कोसे कहीं ना प्रैक्टिकल जेहेतु अच्छी प्रैक्टिकल रो मध्य कई जन तुमको भाईबार मध्य क्वेश्चन पचारि पारंते सो नेक्स्ट देखिबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कौन ओके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ आइडियल एंड एक्चुअल ऑफ अ मेजर वैल्यू जदि आमे मेजर करूचे बा कोनोस गोटे वैल्यू आमे जदि मेजर करिवा सो कोन मेजर में करिवा दीटा केसेस में जो वन इज आइडियल वैल्यू आउट होच हमरा एक्चुअल वैल्यू आउट होच हम मेजर वैल्यू तीनटा वैल्यू आमे जानिबा कोन कोन डिफरेंट सो आइडियल वैल्यू कहले कोन बुझुछो जे कोन से आमे आइडियल वैल्यू कहले द वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटीज मन रखथिबो कोन the value of any quantities जे कौन से quantities हो ओके which is absolutely true सदाबेला पई से सत्य हे कि थिबो सेटा आउ केबे हेले मिथ्या होबनी बा कोन से पे खादा नथिबो प्योर सोना थिबो बोले हम कहबा ओके जोडे कि कोन से रूपे सेतरे एडिंग हे नथिबो absolutely truth is called as of ideal value and the real value or actual value kono the standard value of a quantities the standard value of a quantities which closest to the ideal value जोडे कि क्लोजेस का सहित ना आइडियल वैल्यू पाखा पाखी जे थिबो सेटा को हमें रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कहबा बट से आइडियल वैल्यू नथिबो आइडियल वैल्यू रो पाखा पाखी थिबो सेटा को हमें रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कहबा एंड मेजर वैल्यू कोन कहबा ना मेजर वैल्यू हला द वैल्यू obtained after the measuring by once by a measuring instrument so good जिकोन छोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे हमें जदि मेजर कला पर जो वैल्यू रे देखेला ताको कहा जिवो मेजर वैल्यू ता माने ए मेजर वैल्यू पे हमें कोन करछे माने इंस्ट्रूमेंट आल्सो यूज एंड रियल वैल्यू पे मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज और आइडियल वैल्यू मतलब इंस्ट्रूमेंट सो जिकोन से हमें मेजरिंग करछे इंस्ट्रूमेंट से मेजरिंग करछे सेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट सो आफ्टर मेजरिंग पर जो वैल्यू रा शो अप करेबो दैट इज कॉल्ड एज अ मेजरिंग वैल्यू एंड रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कोन ना आइडियल वैल्यू रो पाखा पाखी जोडा थियो सेटा को हम रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कहबा देन आइडियल वैल्यू कोन ना एब्सोल्युटली अबाउट ट्रू सपोज गुटे सपोज तुम पाखे 5 टका 5 रुपीज अच्छी ओके तुम पाखे 5 रुपीज दैट इज 5 रुपीज अच्छी दैट इज ओरिजिनल 5 दैट मींस ये हला हमर कोन इज द हमर आइडियल मन रखिथिबो ये हला आइडियल वैल्यू सो दैट मो जदि किछि नले तुमको जदि मु देइथिली केते 499 4 टका 99 पैसा देइथिली ता माने पाखा पाखी रहिछि दैट इज कॉल्ड एज कोन रियल वैल्यू ओके मेजरमेंट कला पर मोर केते आसिला ना 4.4 55 दैट मीन 4 टका 55 पैसा 50 सब्सिडी किंबा हमें अदर वर्ड रे 4.489 मते कहि परिबा सो ए जिंस को हमें कोन कहछे मेजर वैल्यू सो मेजर वैल्यू आ हमर रियल वैल्यू आइडियल विथ डिफरेंस कोन आइडियल सदा बेले ट्रुथ ना कोन से रियलिटी वैल्यू तार जोड़ा थाए और रियल वैल्यू ने कोन बुझे ना आइडियल वैल्यू रा पाखा पाखी जोड़ा हमें शो ऑफ करउथुबा हमें देखौथुबा किंतु मेजरमेंट कला परे किंतु जेहेतु हमर 4.55 से को हमें 5 भी धरिबा 4.89 को मतलब 5 भी नहीं परिबा बा 4.499 को मतलब हमें 5 नहीं परिबा सो डिफरेंस हला कि 4.99 हला हमर रियल वैल्यू एंड 5 हला हमर आइडियल वैल्यू एंड 4.89 हो कि 4.55 हो हमर कोन मेजर वैल्यू सो जानि पाइलो सो मेजर वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक विषय तीन जन विषय जानिलो एबे हमें जानिबा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सो जेकोन छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हमें फर्स्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूजेस करछे सम ऑफ केतोडा कैरेक्टरिस्टिक रही थाए सो जो कैरेक्टरिस्टिक रही से इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कोन हमें से विषय जानिबा सो मन रख देबो कैरेक्टरिस्टिक इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट टर्म एग्जाम रे पॉइंट ऑफ बहुत थोर क्वेश्चन आसे व्हाट इज एक्यूरेसी ए ऑन द वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए थ्रू मतो एक मार्क आसे so what is the accuracy kono the closeness of a measured value to a standard or a known value suppose तम कोन कहछि closeness of a measured value जब हमरा 5 थिला हमरा रुपीस ताको हमें कोन स्टैंडर्ड और नोन ऑफ द वैल्यू तुम जानि छ वैल्यू तार एक्यूरेसी जदी 4.99 रहिला दैट इज गैप रहउछ ना डिफरेंस होछ सेटा केते एक्यूरेसी केते रहइबो
4.99 दैट मींस एक्यूरेसी मेंटेन करूछे तमे जानि थिबो बेले बेले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुमको 120 टा क्वेश्चन अछि सेते 82 टा क्वेश्चन कला सो 82 रो क्वेश्चन अटेंड जो कले सेते मध्ये 81 दैट मींस एक्यूरेसी तमरो भलो अछि पर्सनली जदि 82 रो 82 कले एक्यूरेसी तमरो सो एक्यूरेसी कहले कोन बुझाइबो ना एक्यूरेसी वैल्यू कहले द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू सो मेजर्ड वैल्यू रो क्लोजनेस पाखा पाखी को आमे कहबो जे स्टैंडर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू हम जानि थे वैल्यू तक जदि कहबा दैट इज कॉल्ड एज कोन एक्यूरेसी बोलिका देन प्रेसिशन कोन ना प्रेसिशन द क्लोजनेस ऑफ द मेजर टू ईच अदर so closeness of a measurements the closeness of a measurement each other that is called as of a precision so closeness of a measured each other सेटा कोन को जिवो हम प्रिसिशन वाली कहबा एक्यूरेसी का को जिवो ना क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू किबा जणाते वैल्यू का हम जदी करेबा क्लोजनेस थिबो ता कोन को जो एक्यूरेसी वाली कहजो सपोज मो जानि छी मोर वैल्यू टा केते छै 5 छै तो 499 वैल्यू ला कोन मेजर्ड वैल्यू असला जदी मोर 455 असला मेजर वैल्यू सो ए जो क्लोजनेस पाखा पाखी जोडा रहउछि दैट इज कॉल्ड अप एक्यूरेसी बोली कहबा सेंसिटिविटी कोन ना सेंसिटिविटी इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन रे एग्जाम रे बहुत थर क्वेश्चन आसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करबा ओके so sensitivity कहले कोन बोला ना sensitivity देला small changes in output divided by small changes in a input मन रखतबो sensitivity हैला कोन output o by input so output जहा बा कोन change output input मद कोन हबो से मद change input that means of हमें अदर वर्ड कोन को del v naught by del हमर v1 सो ए जो del रो मीनिंग डाला कोन ना चेंज मन रखितो del मीनिंग डाला चेंज वैल्यू ओके सो आउर मध्ये हमें सेंसिटिविटी वाले हमें अदर वर्ड आउर कोन कहि परबा ना सेंसिटिविटी मध्ये आउर हमें कहि परबा जदि हमें कोन सुपे सॉरी जस्ट मिनट ओके सेंसिटिविटी आउ कोन ना सेंसिटिविटी आउर मध्ये रहिछि sensitivity equal to 1 by deflection of factors माने 1 by deflection factor sensitivity is a 1 by deflection of factor it is a very very important question exam रे मतलब प्रॉब्लम पड़े ओके व्हाट इज द सेंसिटिविटी पचारते क्वेश्चन तब जानि छ डिफ्लेक्शन फैक्टर 1 by डिफ्लेक्शन फैक्टर जदि मोर एले सेंसिटिविटी इज इक्वल टू मोर डिफ्लेक्शन 1 by डिफ्लेक्शन फैक्टर रोचे देन मोर डिफ्लेक्शन फैक्टर कोन आसीबो obviously 1 by upper sensitivity जेमति कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबा कोन सेंसिटिविटी इक्वल टू 1 by डिफ्लेक्शन फैक्टर सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबा किछ नै माने कोन हो 1 अछि सो दैट हमें s इनटू आकु करे s इनटू डिफ्लेक्शन फैक्टर इज इक्वल 1 असला तो डिफ्लेक्शन फैक्टर जदि पछाइ तो केता छै 1 by upper sensitivity बा सेंसिटिविटी जदि पछाइ तो 1 by upper डिफ्लेक्शन फैक्टर्स मन रखते गोटे जिंस ओके 1 by upper sensitivity और 1 by upper deflection factors okay हां नेक्स्ट पॉइंट देखिबा सेंसिटिविटी वाला और मत सेंसिटिविटी हे परिबो कोन ना सेंसिटिविटी और मत हे परिबो rm बाय बा मीटर रेजिस्टेंस बाय हमर v वोल्टेज इन फुल स्केल ऑफ डिफ्लेक्शन वोल्टेज इन फुल स्केल ऑफ डिफ्लेक्शन ओके जस्ट मिनट प्ले मैंने just 2 minutes okay next देखिबा कोन सेंसिटिविटी कोन सेंसिटिविटी अनदर सेंसिटिविटी होला rm by voltage in full scale deflection जदि हमें rm माने कोन होला मीटरिंग रेजिस्टेंस हम वोल्टेज fst माने होला फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन और वोल्टेज एई दे मते ये भी मते गोटे फार्मूला तो हमें आको मते लिखि परबा कोन ना 1 by rm 1 by vfsd divided by rm आप यार यूनिट कोन रहबो सदा मन रखतो ओम पर वोल्ट
सेंसिटिविटी रो यूनिट कोन रहबो सेंसिटिविटी रो यूनिट हला ओम पर वोल्ट एग्जाम रे पचाई छी बहुत थोर एग्जाम रे क्वेश्चन आसी व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इज द ओम पर ऑफ वोल्ट सो सेंसिटिविटी मन रखो ओम पर वोल्ट मींस ऊपर रेजिस्टेंस तळे रहबो कोन ऊपर रेजिस्टेंस रहबो तळे वोल्ट रहबो ओके सो दैट ये मध्ये हमर रहला कोन ऊपर रेजिस्टेंस तळे कोन रहला वोल्ट रहला सो rm इज इक्वल टू फुल v fst और अदर वर्ड से हमें और मध्ये कहि परिबा कोन 1 by v full scale of voltage deflection voltage divided by upon metering resistance ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये मध्ये और गोटे मध्ये हे परिबो कोन ना fst इक्वल टू 1 by ifst सो 1 by ifst ये मध्ये कोन हबो ओम पर ऑफ वोल्ट देखो ifst माने फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज थिला फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मध्ये थबो ओके करंट थिले मध्ये हे परिबो तते वोल्टेज थिले मध्ये हेई परिबो ओके तार यूनिट सदा बेले कोन हबो ओम पर ऑफ वोल्ट तो यार वोल्ट ने मीटर हबो so next question देखिए repeatability कौन repeatability ला the repetition of a reading of an instrument the repetition of a reading of an instrument taken over a period of a time so repeatability माने कौन the जदि हमें repetition बा जे कौन से गोटे वैल्यू को हमें repetition sorry just minute हाँ the repetition of a reading of an instrument taken over a period of time so some किछि period पय जदि हमें taken over करबा that is called as कोन repeatability reproducibility कोन ए क्वेश्चन आसे पिले माने very very important question repeatability over a period थिबो कहा ऊपर थिबो ना is repetition of a reading of an instrument taken over a period of a time so reproducibility kono na it is the defined as the measure of a repeatability so ame jetale measurement kale repeatability ता ऊपर मेजरमेंट ऑफ रिपीटेबिलिटी मन रखथबो एथरे रिपीटेबिलिटी जदि दे दबा मेजरमेंट ऑफ रिपीटेबिलिटी दैट इज कॉल्ड फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी जदि कोन सी रिपीटेबिलिटी दबा रिपीटेशन दैट इज मींस ऑफ कोन अब रिपीटेबिलिटी हो आसी आउ किस मन रखे दरकार ए दुटा रिपीटेशन हैला रिपीटेबिलिटी एंड repeatability जदि दे देला that is called for reproducibility so that time कोन ना it is defined the time of a required by in a measurement of a system begin the response to any change in the measurement माने जदि हमें कोन से जिंस रे रिफाइन करूचे and it is the defined in the as the time required suppose गोटे जिंस को हमें करबा पय हमको टाइम रिक्वायर पड़छ हम डिफाइन कर देले केते हाफ एन आवर ओके हाफ एन आवर जो डिफाइंड जदि हम कर देले that means required by a measurement system to begin the response to the change in the measurement तो आरंभ करे जो रेस्पॉन्स सपोज म हाफ एन आवर कर देली दैट मींस मु 15 मिनिट रे आरंभ करबी 15 मिनिट पर आरंभ करी से हाफ एन आवर सरीबो दैट द रिफरेंस ऑफ डेड टाइम डेट मींस माने शेष समय जदि मु देछि 12:30 हेला मोर डेड टाइम दैट मींस 12:30 12:31 के हेला होनी 12:31 हबन है मोर डेड टाइम रे काम सरिया जरूरी कोन सपोज मु 12 जदि वर्क करली ताले म 12:30 काम सरीबो किंतु जदि म 12:25 रे काम करबी त सरीबो कि सरीबो नहीं दैट इज मोर डेड टाइम दैट मींस परफेक्ट जो टाइम दे देला सेटा हम आ चेंजेबल करबो do respond to change the in the measurement so dead zone hela kono it is the defined as the range of a input value for a which there is a no output मान से कोन कहूची जहार किछि आउटपुट नथिबो कोन कहूची डिफाइन द रेंज ऑफ द इनपुट वैल्यू ऑफ रेंज को हमें इनपुट वैल्यू for which there is a no output value कोन से आउटपुट वैल्यू नथिबो linearity कोन if the output of any instrument is proportional to the input given to it then it is called as a linear माने कोन कहूची if the output out of any instrument जे कौन सी इंस्ट्रूमेंट रो आउटपुट हो इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का से तो इनपुट गिवन इनपुट जहां देथिबो आउटपुट रो बोलते सही आसे दैट मींस ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट इक्वल टू बाय आउटपुट हो जहां वैल्यू थिबो गिवन टू इट देन इज कॉल्ड अ लिनियरिटी इनपुट इक्वल टू आउटपुट हे गेले एटा लिनियरिटी हे जिवो एंड रिजोल्यूशन कहले कोन बुझतो रिजोल्यूशन और अदर वर्ड से डिस्क्रिमिनेशन बोले the smallest change in a measurement of a value which in the instrument will be response जदि कोन से टिके ना को चेंजेस हला देन हमर तक कोन हबो निश्चित भाबरे हमर रेस्पॉन्स करे वो इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड as रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन हमें देखो
कौन से गोटे मु मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रो मोर पॉइंटर टा मूव कर जदि पॉइंटर टिके न हलेला दैट मींस ऑफ पॉइंट 1 को जदि पळे आइला ये मते रेस्पॉन्स हो दैट इज कॉल्ड फॉर रिलेशंस ओके सो अनदर पॉइंट इज ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट माने कोन द फॉर ए पर्टिकुलर ऑफ वैल्यू जदि हमें पर्टिकुलर ऑफ वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएशन in output of an instrument from a desire of the value तो हमें देछि कोन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द इनपुट जदि हमें गोटे पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट वेरिएशन करबा कहार ना आउटपुट ऑफ इंस्ट्रूमेंट from the desire of value and there is a no drift for a perfect of reproducibility तार कोनोसी ड्रिफ्ट नहीं जेडे कि हमें परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी कर परिबा दैट इज कॉल्ड एज कोन ड्रिफ्ट बोली हम कहबा ओके जो जिंसडा पर्टिकुलर दैट मी आउथर कहि दोछि देखो तार मीनिंग हला कोन आउथर देखो मीनिंग डाला ड्रिफ्ट माने कनाला फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू गुटे पर्टिकुलर वैल्यू थिबो ऑफ द कार ना इनपुट रो एंड वेरिएशन इन आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो आउटपुट रो मध्ये किछि वेरिएशन रहथबो इनपुट वैल्यू सपोज मो इनपुट 5 देले आउटपुट रो मोर कोन आसिला 4 एस पर 3 एस पर 2 एस पर 1 एस पर बट 5 5 अबे आस पर 499 मध्ये पर 499 हे पर देखि कोन द वेरिएशन इन आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ए डिजायर वैल्यू अर्थ कला कोन जेति की आवश्यकता थिला तेति रो जदि हमें कोन आउटपुट आसिला ताले कोन देयर इज ए नो ड्रिफ्ट फॉर ए परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी से पई हमर देयर इज ए नो ड्रिफ्ट कोन तो ड्रिफ्ट नहीं परफेक्ट अपकार रिप्रोड्यूसिबिलिटी सो स्टैटिक एरर कोन इट इज ए डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन ऑफ मेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू सो मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू मध्ये जो डिफरेंस रहइबो दैट इज कॉल्ड ऑफ स्टैटिक एरर तो मु तीनटा वैल्यू कहिथिले गोटे होचे आइडियल वैल्यू गोटे होचे एब्सोल्युटली वैल्यू और ट्रू वैल्यू आउट होचे हमर मेजर वैल्यू सो मेजर वैल्यू और एब्सोल्युटली वैल्यू मध्ये जो डिफरेंस रहइबो दैट इज कॉल्ड ऑफ स्टैटिक एरर देन हाइस्टेसिस कोन हाइस्टेसिस इज फेनोमेना व्हिच डिफिसिट डिफरेंस आउटपुट इफेक्ट व्हेन द लोडिंग एंड अनलोडिंग सो जतरा हमें लोडिंग और अनलोडिंग करूचे कोन रूप लोड दउचे बा हमर इंस्ट्रूमेंट जतरा पॉइंटर मूवमेंट करूची पुन बैकवर्ड करूची that moment second deficit is difference output हमर इफेक्ट हमर डिफरेंस देखैतो चेंज हो परफेक्ट वाला आसु नथिबो दैट इज कॉल्ड एज अ हिस्टोसिस ओके थ्रेशोल्ड कोन इट इज द मिनिमम मेजरेबल ऑफ इनपुट एटा एग्जाम रे आसीतिला सो थ्रेशोल्ड माने कोन ना मिनिमम मेजरेबल ऑफ इनपुट बोले हमें कहबा थ्रेशोल्ड एंड लोडिंग इफेक्ट कोन लोडिंग इफेक्ट हला मेजरमेंट सिस्टम आर यूज्ड some part of energy from the input system and known as a load so जतले हमें कोन से मेजरमेंट सिस्टम बा जो मेजरमेंट सिस्टम को से व्यवहार करते कोड यूज करते some part of energy हमें व्यवहार करते some part of and from the input system is known as a loading effect ता कोन को जो loading effect बोली कहे so next point is a dynamic of a characteristic of an instrument so dynamic characteristic of an instrument कहला हमें कोन बुझौछे okay so dynamic instrument characteristics कॉल कौन होते हैं the behavior of a measuring instrument and the output also change along with the change in input जतरा output भी change होबा ता सहित हमर input भी change होबा एटा कोन कहजो dynamic of a response जदि मो output को change करूची output change केला हमर input रो मध परिवर्तन आछे एटा कोन कहजो dynamic of a characteristic बोली कहै जेतो सो कौन डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ना सिस्टम इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट डायनामिक इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स करे सिस्टम इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गोटो इज स्पीड रेस्पॉन्स गोटो इज मेजरमेंट ऑफ लैग एंड अनदर इज द डायनामिक ऑफ एरर एंड अनदर इज फिडिलिटी ता कोन कहदियो फिडिलिटी बोली कहला सो दैट स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स कौन इट इज द rapidity with which an instrument responds to change in the measuring of सो कौन से हमें जदि मेजरमेंट क्वांटिटीज को व्यवहार करूचे इट इज रैपिडिटी with which an instrument is response बहुत शीघ्र फास्ट रेस्पॉन्स करेबो जतल केतले ना मेजर ऑफ क्वांटिटीज हम जतल मेजर क्वांटिटीज करे दैट इज स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स सो मेजरमेंट ऑफ लैग कोन इट इज द टाइम टू रिक्वायर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट टू सेटल इन द फाइनल ऑफ स्टेडी पोजीशन तो फाइनल स्टेडी पोजीशन पई हमें जतल ओरे टाइम ऑफ दरकार पड़ुची से मोमेंट कोन स्टेडी कंडीशन रहछि स्थिर अवस्था रे से टाइम कंडीशन पड़ुछि ताकि कला को मेजरिंग ऑफ लैग बोले हमें कहउछे so dynamic error कोन ना इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू चेंज
change with time. So true value content change haba with the time, that is called as a kona dynamic of error. And fidelity kona, it is ability to the system and reproduce will the output in the same form of the input. तामाने कौन कहते fidelity मैंने आपसे देखा, it is the ability of the system to reproduce the output, to कौन reproduce the output in the same of the as input. Input रे जहाँ देइसे output रे मध्य हम same रहेगा. Input बा input जहाँ थिबा output रे मध्य रहेगा, that is called as कौन fidelity. So output is equal to input थिबा ताको हमें कौन कहथिले टिके आगरो. तो output input जहाँ थिबा कौन कहथिले टिके आगरो ले पढोथिले देखा. Output effect when the loading, sorry, drift only जोड़ा के a particular value of the input variation in output of an instrument is called as कौन drift बोले हमें कहबा. एटा पढिथि drift बोले ओटे जानिले टर्म आउट हमें कौन टर्म fidelity टर्म बोले जाने से दीटा मन रखिबो. drift value और fidelity value एटा मन रखितो, very important question. देखिबा error in a measurement and thereupon statistical of analysis. तो हमें जो just minute प्लीज. ମୋ ଭଏସ ଟା ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଏସ ଶୁଭୁଛି? ओके. नेक्स्ट पॉइंट error in a measurement and thereupon statistical of analysis. देखो नेक्स्ट क्लास रे बुझिया हमारे ते लॉन्ग ही अछि, बेसी नहीं. देखो इज द टोटल मोर 80 टा स्लाइड अछि. मु स्लोली बुझेबी. ओके. तो सेति वीडियो देखिबो अब बुझि जिवो. वंस टाइम सेकंड टाइम यदि वीडियो वाचिंग कर दो त बुझि जिवो. नेक्स्ट टाइम कला लो तुम इजी हो. एटा को हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा. ओके. सो थैंक यू वेरी मच जो मान सब वाच कले आ एसपी क्लासेस सब बहुत धन्यवाद जे कि गोटे भल अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करैछि पिलान पे. या पर मु एवरी जो जिनसडा हमें पढुचे से जिनसर क्वेश्चन मध्ये हमें डिस्कशन करबा. ओके. सपोज मु ए जिनसडा वर्तमान शॉर्ट नोट हिसाब रे पढौछु, मु आपको गोटे शॉर्ट नोट हिसाब रे पढौछु. तो आमे ताको यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करबा. सो मु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करे को मु तो मटेरियल मध्ये प्रोवाइड भी कर देबी. हम एप्लीकेशन जो मान सब लिंक ही करछंती. ओके. जदे कोन से मटेरियल को डाउनलोड करिया चाहछंती बा जदि ताको ऑफलाइन मध्ये प्रिंट काढी के हार्ड कॉपी मध्ये प्रिंट काढी पढिया चाहछंती ताले मो से कांटेक्ट करंतु 8917 355 721 ये नंबर रे कांटेक्ट करबे. तार मध्ये गाइड भी दे देबी किबा हमर ऐप को मोबाइल ऐप रछि. सो ऐप रे जदि हमें करबा इलेक्शन स्टडी पॉइंट जदि ऐप डाउनलोड करिकि सेथु मध्ये हम को पीडीएफ को मध्ये वाच कर करबो. ओके. सो थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास को वेट करंतु. नेक्स्ट क्लास में हम पढिबा कोन एरर इन द मेजरमेंट एंड देयर ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑफ एनालिसिस. ओके. थैंक यू.